वेरी आप ये सोच रहे होंगे कि पहली बार मैं फॉर्मल्स में ये वीडियो बना रहा हूँ. एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने स्कूल में बना रहा हूँ जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ. So basically in this video we will learn how to play I'm Yours by Jason Mraz. इससे पहले कि मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊं या कॉर्ड्स के बारे में बताऊं, स्ट्रक्चर के साथ पहले हम थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा स्ट्रक्चर का और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर है सॉन्ग का. सबसे पहले वर्स, कोरस, वर्स 2, कोरस ब्रिज, वर्स 3, कोरस एंड देन आउट्रो. मैंने वर्स और वर्स 3 को रेड में इसलिए मार्क किया है बिकॉज उनकी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम है. वर्स 2 में कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज हो जाता है और आपको उसी कलर कोडेड बॉक्स के अंदर उसके रेलेवेंट लिरिक्स भी दिख जाएंगे. सो वर्स और वर्स 3 का जो कॉर्ड है वो है जी, डी, ई माइनर एंड सी. एंड वर्स 2 में जो कॉर्ड्स यूज हो रही हैं वो है जी, डी, ई माइनर, सी. बट सेकेंड टाइम व्हेन यू प्ले दैट यू हैव टू फिनिश दैट विद द कॉर्ड ए. ग्रीन से मैंने हाईलाइट किए हैं सारे कोरस और कोरस के लिए जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो सेम है थ्रू आउट द सॉन्ग विच इज जी, डी, ई माइनर एंड सी. 1 bar each, that means 4 counts for each chord. That also applies to the outro. ब्रिज की कॉर्ड प्रोग्रेशन सबसे डिफरेंट है पूरे सॉन्ग में. सो ब्रिज है जी फॉर 2 काउंट्स, डी फॉर 2 काउंट्स, ई माइनर फॉर 2 काउंट्स, डी फॉर 2 काउंट्स, देन सी फॉर 4 काउंट्स एंड A7 फॉर 4 काउंट्स. ये बेसिकली डू 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 वो वाला पार्ट है सॉन्ग का. ये ब्रिज सेक्शन को आपको अलग से प्रैक्टिस करना है अच्छे से क्योंकि इसके अंदर A7 कॉर्ड भी यूज हो रही है. अगर आपको A7 कॉर्ड नहीं आती तो आप A मेजर कॉर्ड भी यूज कर सकते हो. So ये था सारा structure. Now I will teach you how to play exactly this on the guitar. Okay, so let's get started. First of all, we'll just play the verse section of the song. So जो verse है जो कि red color में marked है, that is G, D, E minor, C. इसके लिए जो मैंने आपको डेमो में स्ट्रमिंग सिखाई थी, that is down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, down, up. But if you don't know how to palm mute yet, then you can just simply use this. Up, down, up, down, down, 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 up, down, up. Before you actually try the strumming, you just try to play the chord progression, which is just simply 4 counts for each chord. That's like G, 2, 3, 4. Sorry, before that, I have used capo. For the original key. If you want to play it on the original key, then you will have to place capo on the 4th fret and then play your chords as normal. Like you play G major like this, D, E minor and C. But if you don't want to use capo, then you can just simply play without capo. आप इसको यहाँ पे ऐसे G major, यहाँ पे D, E minor, C, अब वैसे भी बजा सकते हो. G, 2, 3, 4, D, 2, 3, 4, and then E minor, 2, 3, 4, C, 2, 3, 4. अगर आपको सिंगिंग साथ में करनी है तो आप सिर्फ इसी के साथ स्लोली आप इसको प्ले करो पहले. And then you can start. Well, you got that. So this is how it goes. Okay, and then verse 2, when, as I've told you that the chords are different, it goes like this. D, E minor, then C, but second line is G, then D, then E minor, and then C, and then A major. 2, 3. ये A major chord होती है loved word पे. So it's like that part. That is A major. And then you go to the chorus actually. Chorus is G, the same progression, G, D, then E minor, and then C. अब strumming आप इसके साथ यूज कर सकते हो. Down, 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 up, down, up, 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 down, down.
then you can increase the speed. मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों स्ट्रमिंग्स को आपके लिए लिख दूंगा, आप उसमें से स्ट्रोक्स एग्जैक्टली कॉपी करके कर सकते हो, ये वाली भी और ये वाली भी, both the strummings. Let's move on to the bridge. अब bridge portion है do 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 do, that one, so it's like E minor 2 D 2 C 2 3 4, and then A7. If you don't know A7, you can play A major. So G, and then go back to chorus. This is what you repeat for the outro portion as well. You can always pause this video for you to just focus on one thing at one time. Strumming मैं नीचे description में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको copy कर लेना. Strumming की अलग practice करनी है, chord shifting की अलग practice करनी है, और उसके बाद आपको दोनों चीज़ें एक साथ डालनी है. chord shifting और strumming धीरे धीरे practice करो, and then you will be able to nail it. और आप अपने वर्जन से भी बजा सकते हो. सिर्फ मैंने जब सिंगिंग और गिटार प्लेइंग स्टार्ट की थी, आई जस्ट यूज्ड टू प्ले वन कॉर्ड. तो जैसे I won't be singing the whole song as I've told you the reason before, but you will get to know about it. What I can do is I can post a full-fledged video of me playing this song Instagram पर. तो मैं Instagram में chords के साथ एक अच्छी वीडियो पूरी प्ले करके सॉन्ग के साथ आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो आप वो भी आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. Okay, I hope you like this video and share your comment in the comment section, and please subscribe to the channel. I have seen most of you are just watching our videos, and then 77% of our viewers are not actually subscribers. So if you can please show us your support by subscribing to the channel. That makes a lot of difference. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.